Hey, we are good to go. या सो हाय सर, वेलकम इन दिस सेशन। ये पॉडकास्ट थोड़ा सा वेब 3 और ब्लॉकचेन सिक्योरिटी से रिलेटेड होने वाला है बिकॉज यू आर ए एक्सपर्ट ऑफ दैट डोमेन। ठीक है। Hmm. सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, आप अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए लाइक हमारी ऑडियंस को कि आप हु आर यू एंड व्हाट यू आर डूइंग। Thank you, Kumbhaj. Thank you for having me on this podcast today. As you know, my name is Abhishek, and I am the co-founder of Securedapp. And Securedapp is primarily a blockchain security company. We create products and develop products for every for all the developers who are building into Web3 space. Okay, so this is या what we do. We have a product called Solidity Shield. This is world's first AI powered vulnerability detection application through which any developer working into Web3 space can develop and detect more than 100 vulnerabilities within 30 seconds. ओह वाओ, ग्रेट। So this is what we have already done, deployed, and we this is at present it is premium. Anybody, चाहे वो tier 1 में हो, 2 में हो, कहीं भी हो, रात में आप if you are building your software or some project, you can come use it for free. Soon we are going to monetize it, but still we will keep it for free for a bigger section of student community because that is what we want to support. Coming back to my journey, I have close to 15 plus years of experience and into marketing and growth. In the process, I have been part of a marketing team of Wire.com, commonflow.com. In fact, I have led marketing for companies like wakilsearch.com. Prior to this, Hirect India. So यस। this is what I have been doing. I have been part of marketing and growth, automation, SaaS, and what do we call content marketing, PR, etc. are my part of my core expertise. ओह ग्रेट ग्रेट। एंड सर आई हैव a question like what inspired you to co-found a company in the web 3 space? Oh, that's a very interesting question. I have a co-founder. His name is Himanshu Gautam. He is IIT Kanpur pass out, Oh, and he has a BTech plus MTech from IIT Kanpur into blockchain development. I met him because of one of our common acquaintance, hmm. and three of us were planning something, and suddenly the person who introduced each other to each other has decided to move on, and we stuck to each other with each other. Oh, And having spoken to Himanshu for close to 3 4 months, I discovered that he has amazing coding skills. I got a chance to have a look of the projects that he have created, and then I realized that with all that expertise and dapps that he has been creating for some clients and all, he has his inclination to start its own startup, and he is in search of somebody who can look after the marketing and growth. And that's where I thought that okay, this is amazing time. Web3 is here to stay. It may take time, but it is here to stay. So we thought that it is better that we should come together और हम दोनों मिलके स्टार्ट करते हैं कुछ एंड दैट हैज टू बी इन ब्लॉकचेन, दैट हैज टू बी इन वेब 3, ऐसा करके हमने कुछ सोचा एंड देन we figured out some very serious problem which is into security, which is into tokenomics and all, and with that those ideas we got into secured app. yeah, okay, yeah, great, great. एंड सर वन थिंग्स एंड लाइक आप मतलब मोस्टली आप एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन से हैं लाइक मैनेजमेंट डोमेन से। आपने हायरेक Correct. हायरेक में भी आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है एंड काफ़ी अच्छी स्केलेबिलिटी रही है आपकी। तो मेरा क्वेश्चन था लाइक करंट टाइम में जॉब का जो सेगमेंट है इंडिया में क्या ओवरऑल ओवरऑल वर्ल्ड में है लाइक टेक आईटी डोमेन में जो जॉब चल रही हैं, जॉब में रिसेशन है एंड जॉब क्राइसिस है मार्केट में, इसका क्या इफेक्ट है, मतलब क्या इम्पैक्ट होने वाला है लाइक हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं? क्या वेब 3 के आने से, वेब 3 की वजह से काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट होगा इस डोमेन में? When it comes to recession and your question was attrition and layoff something, या uh, देखो this is going to stay. ये ऐसा नहीं है कि ये cyclical होता है. And Hirect being a hiring app, I had seen that very closely. ये cyclical होता है. It comes and goes, comes and goes, comes and goes. So every 2 years you'll see a phase comes, a new technology comes, people start adopting those technology, and the older technology gets washed away. Okay,
and written off. तो ये प्रोसेस चलता रहेगा. Now the question is, someone who is getting into this and trying to build their career into Web3 or a new technology, uh, there is no point in time when you will not see that the demand of the engineers or the demand of the developers have gone down. सिर्फ इतना हो सकता है कि कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, but demand is always there. And somebody who is very good in coding, be it a front end, back end, full stack, or whatever technology, AI, ML, they are working on, they will always be in demand. When I mean to say demand, what we realized is आपके फर्स्ट फ्यू years में ना, apply to yourself, apply to your friends, and say everybody has to concentrate on building their understanding about how to go about learning technology, how to go about coding, how to go about creating a product for masses. अभी हो क्या रहा है कि फर्स्ट लर्निंग फ्यू ईयर्स में ही हाउ टू गो अबाउट बिल्डिंग करियर पे लोग का ज़्यादा ध्यान है. आई डोंट नो कितने काउंसलर आके उनको समझा देते हैं कि आप इंटरव्यू पे काम करो, इस पे काम करो, इंग्लिश पे काम करो. करो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन करो, बट उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि यू शुड नॉट बी एक्सपर्ट इन वॉट यू डू एंड यू शुड नॉट नो योर कोडिंग स्किल्स. Or give some time to yourself before you take a leap. अगर फर्स्ट टाइम से ही आप लीप लेते हो तो देयर इज नो हार्म, यू गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी वर्क, बट but then you have to stick with it, is what I said. यस, So मेन बात. recession, to answer your question in short, recession is a part of the cycle. It is going to stay. It is going to come. Doesn't mean that all those who are thriving cannot survive. We have been surviving, and I don't think I have seen subprime crisis. I have seen a time during 2016-17, which is the demonetization time. Then we have seen what is that recently COVID time, and we have been surviving all. Correct. या सब तो देख ही लिया ना हम लोगों ने. या ग्रेट सर. एंड लाइक आपने अभी अभी इंडिया में वेब 3 कहाँ स्टैंड कर रहा है, वेब 3 एंड ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजीज I इन think I इंडिया? think it's time to it. It is a matter of time that India would be the leader in Web3. आप देखो जितने डैप्स एंड डेवलपमेंट हो रहा है Web3 स्पेस में, I don't see that is happening in Web2 thing. Web2 is almost mature. I'm not saying there is no scope for improvement. What I said is almost mature, and the new product which is coming is very similar to existing product. So वहाँ पे कुछ डेवलपर्स को थ्राइव नहीं मिल रहा है. अगर वो कैब एग्रीगेटर बना रहे हैं तो 4 पाल पहले से एग्जिस्ट करते हैं. वो फूड एग्रीगेशन बना रहे हैं तो 5 पहले से एग्रीगेट उसमें एग्जिस्ट करते हैं. अगर वो एडटेक बना रहे हैं तो 20 पहले से एग्जिस्ट करते हैं. वहाँ पे डेवलपर को ना वो फन नहीं मिल रहा है, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी फिल्ड, एंड देर आर सम गैप्स जहाँ पे स्टिल वर्क इज गोइंग ऑन. But I'll say to an extent it has matured, and uh, it is time for Web3 to thrive. So एक डेवलपर को क्या चाहिए, मोर देन व्हाट यू अर्न एंड टेक केयर ऑफ फैमिली, यू वांट टू क्रिएट अ प्रोडक्ट विच इज यूज्ड बाय मासेस. करेक्ट. आप चाहते हो कि मेरा ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं मैं जो हर आदमी यूज करे और बोले क्या क्या किलर प्रोडक्ट है, क्या सीमलेस एक्सपीरियंस है. करेक्ट. या डेफिनेटली. अब अगर वो चाहिए तो किस स्पेस में, समथिंग विच इज एग्जिस्टिंग, वहां पे तो मजा नहीं आएगा आपको जो बहुत सारा एग्जिस्ट है. सो आई हैव सीन many young people and the students and the developers moving towards Web3, and this is a very good sign. um, to give confidence to all of you, I can say that Web3 is here to stay, and it is a matter of time when it just pulls off, like it is going to fly. ओके, ग्रेट. एक बेसिक सा आप रोड मैप बता सकते हैं क्या, लाइक वेब 3 और वेब 2 में डिफरेंट क्या है, क्या चीज़ है ये टर्म्स? लाइक आई एम बिगिनर. एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन इज समथिंग दैट एवरीबॉडी आस्क्स मी, एंड आई थिंक मेनी पीपल आर डूइंग दिस. Web 2 and Web 3 में तो there are multiple differences, but the major difference for anybody to understand is, if you want to own what you are doing, if you want to own your data, you are in Web 3.
So decentralization and centralization is a major difference. Web 3, most of the projects on the Web 3 are decentralized by हम्म, virtue of being into blockchain. मतलब that's what it is expected out of blockchain. वो decentralized है. And while when we talk about Web 2, it is centralized. Now, what is the major difference? In centralization, all your data, be it your email, mobile number, be it your wallet address, anything, is with a central custodian. जो एक बॉडी है वो उसको रखती है, करेक्ट. चाहे वो एक कंपनी है, वो अपने सर्वर पे रखती है, अपनी डेटाबेस में रखती है, करेक्ट, बट उनके पास है. इन Web 3 nobody knows your any of your data. You connect your wallet and use it through private key. No one knows who this wallet belongs to whom, correct. So the major difference is a developer, or mostly for developers, or the users are in control of their data in Web 3, while in Web 2 they are not in control of their data. It is in control of centralized bodies. ओके। लाइक हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वेब थ्री एक ऐसी टर्म है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड आपकी डेटा होगा और आपका पूरा प्लेटफॉर्म एक सिक्योर्ड बेस पे रन करेगा। एब्सोल्युटली, वही बात मैं बोल रहा हूँ. जब आप अपने हम्म। अपने कंट्रोल में रखते हैं तो ज्यादा सिक्योर्ड है, क्योंकि डेफिनेटली। किसी के पास है नहीं. सो नो मिस यूज. सो यू जस्ट नेल्ड इट. मीन डी एप्स डेवलपर्स जो हैं वो दुनिया के या को टेक डोमेन के फ्यूचर हो सकते हैं। That's what we see, and I am quite hopeful Web 3 is going to stay, and it is going to go bigger, not only stay. ओके। सो यहाँ पे सिक्योरिटी ऐप लाइक आप लोग जो प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं अभी करंट टाइम में, ये क्या मतलब इसका क्या रोल है इस डोमेन में? Okay, so I'll just give you, in Web 2, you must have heard, Kamboj, about a lot of cyber security companies. आपकी डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, योर कोड टू प्रोटेक्ट योर सर्वर्स, टू प्रोटेक्ट योर नेटवर्क, टू प्रोटेक्ट योर codes. यस There यस। are a lot of cyber security companies. When it comes to Web 3, again you need a blockchain security company. You need somebody who can protect your data. You not data, who can just find it, that what are the problems, what are the causes. So Securedapp is primarily a blockchain security company. We can develop dApps, we can develop multiple projects, but our forte lies into auditing of these projects. What we do is, if you are building on some project, you just pass it to us, and we will let you know that, okay, this project has got so many vulnerabilities. This has a problem of recurrency. This has a problem of underflow, overflow, cache issue, which should be fixed before it gets deployed. Because once it is deployed, आपको पता होगा कि there is no way of coming back. So it can be used by hacker, it can be used by the bad elements. So secured app comes into picture. हमने इसको रोकने के लिए क्या किया ना, we made a product called Solidity Shield. हम्म। This is an AI powered vulnerability detection application. इसमें क्या होता है कि the moment you upload your project, it tells you within 30-40 seconds that, okay, this project has got so many lines of code, so many contracts, and it has got so many bugs, vulnerabilities, critical issues which should be fixed. अब आपको उससे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि अरे इतना सारा कुछ है, अभी तक तो मैंने देखा ही नहीं था. अब now you go back and work, and our idea is to support the community of developers. Our idea is to support the community of Web 3 students, because we believe audit is a very costly affair, and we believe that if it is a manual audit, it becomes even costlier. So हमने क्या सोचा कि to scale this, we should give something which is any student can afford. पहले तो हम कुछ फ्री देते हैं, क्रेडिट आप कुछ भी स्कैन कर लो. अगर उसके बाद भी आपको चाहिए, एंड यू नीड अ ऑडिट रिपोर्ट, यू हैव टू गो टू इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा, minimal, say about, it start with about 50-60 dollars and goes $200. तो आप जाके उसमें you create your account and you do that. So this is where we come into picture. We are here to secure your Web 3 journey while you focus on building. ओह ग्रेट ग्रेट। या एब्सोल्युटली इट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड लाइक अभी आपने एक वर्ड बोला, कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑडिट। ये टर्म्स क्या होती है, लाइक व्हाट इज द थिंग? Acha, so this is very simple to understand. Smart contract.
And so there are two type of contracts. One is a physical contract and one is a smart contract. Physical contract is a contract जो हमारा डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं. किसी से कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, तो एक पेपर साइन करते हैं और वो फिजिकली हम दोनों साइन करके उस कॉन्ट्रैक्ट से बंध जाते हैं. करेक्ट. Yeah, So it's a legal agreement. It is a binding between two parties. definitely. Same is there on blockchain when we do this with the help of codes. You got it? Yes, yeah. Here there is no physical paper which is changing between two parties. We are again bound, and the smart contracts are the contracts which are lines of codes written ensuring that both the parties are taken care, their points are taken care, and ensuring the transaction happens. It is written on the logic of if and but. Like if this happens, then this should be given to them. And it is immutable. It is very transparent, secured. Nobody can do anything once it is deployed. So any transaction that happens on Web3 space or blockchain space, that transaction happens through smart contract which works in the backend between you and me. Like you buy something from me, I have to give that service to you. You have to pay me. How are we bind it? So we are binded with a smart contract. That's where the contract comes. Now, when the contracts are there, these contracts are prone to vulnerabilities, or hackers can make use of some code bugs. This is where the audit comes into picture. When we talk about audit, we mean smart contract audit, not the financial audit. Yeah, yeah. ओके. सो बेसिकली आप इसकी सिक्योरिटी के लिए लाइक जो कंपनी है, मतलब आप लोग जो स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, इसकी ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट की सिक्योरिटी के लिए आपका क्या फोकस है सिक्योरिटी के सेगमेंट में? तो वहां पे देखो, देर आर मल्टीपल वनरेबिलिटीज. अगर आपको पता होगा कि ये सिक्योरिटी में इश्यूज क्या है तो आप उसको फिक्स कर सकते हो. तो रिट्रेंसी का इशू है, फ्रंट रनिंग का इशू है, अंडरफ्लो का इशू है, ओवरफ्लो का इशू है. देर आर मल्टीपल टेक्निकल इश्यूज प्लस गैस ऑप्टिमाइजेशन का इशू है. ये सारे इश्यूज कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं. हम क्या करते हैं, वी टेक योर कॉन्ट्रैक्ट एंड वी ऑडिट इट लाइन बाय लाइन, एंड देन वी टेल यू कि आप कहाँ से क्या बचा सकते हो और कहाँ से क्या ठीक कर सकते हो. इफ इट इज अ गैस इशू, आई विल टेल यू दैट ओके यू कैन सेव मनी बाय दिस डूइंग दिस, बिकॉज एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट चला गया तो योर कंपनी में एंड अप पेइंग मोर टू द चेन्स. करेक्ट. फॉर एवरी ट्रांजैक्शन गैस फी आपको ज्यादा लगेगा. तो हम ये भी बताएंगे कि दिस इज हाउ यू कैन सेव इट, एंड दीज आर द bugs or vulnerabilities which we should be fixing before deployment. So our complete is on security. ग्रेट. काफ़ी अच्छा यूज केसेस आपने दिया. एंड लाइक बिकॉज आई एम रनिंग अ कम्युनिटी, सो मैं कई बार आपके प्रमोशन, सिक्योरिटी आपके प्रमोशन देखता रहता हूँ कम्युनिटीज़ में. काफ़ी सारे कम्युनिटीज़ में शेयर होते रहते हैं लाइक फॉर नए नए इवेंट्स के लिए एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो मेरा एक कॉमन क्वेश्चन था, लाइक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि सिक्योरिटी ऐप को लाइक किस वे से, मतलब अभी तक ये बूटस्ट्रैप किया है ना, अभी तक तो इन्वेस्टमेंट है नहीं यहाँ पे. सो ये इसको स्केल करने का आपका क्या मतलब प्लान है, सर्टेन प्लान? That's a very मतलब आपने दुखते हुए रग पे हाथ रख दिया है. ठीक है. अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे so far we have been running this company. We have a team of about 12-15 people, and very effectively we are running this capital company on two capital. One is a bootstrap, like a founder's capital, and the other is a customer capital. We do have some paying customers जिसके कैपिटल से हम अपनी कंपनी को चला रहे हैं. डेफिनेटली. We are planning to raise money. We will be soon raising, matlab going into a raise cycle, and we expect to raise money. So this is how. Now, in order to scale, हमने the first thing that we have done is we are partnering with multiple communities जहाँ पे लोगों को पता हो कि सिक्योरिटी इज अ मेजर इशू. अब कम्युनिटीज में बहुत सारे जो दूसरे सिक्योरिटी प्लेयर हो सिर्फ मैनुअल बात कर रहे हैं. मैनुअल इज 10 times of what I will charge you. You go and do research. I'll not tell you the average cost of a project, a good project, average cost, so it could be more or less, is 7,000 USD for audit. Yes. Hmm? And if you come to me, we have been able to bring this down to 3,000 USD. If it is on manual, if it is through product, we will give you at 300 USD. Now you understand where we have been able to bring this down. So to scale it, we know that product is a model
manual is effective, and we also do that, but product is a way to scale, product is a way to help more developers community. सो हमने पहले उसको प्रोडक्टाइज किया अपने ऑफरिंग को. ए बी वी हैव पार्टनर्ड विद कम्युनिटीज एंड वी इंटेंड टू पार्टनर विद कम्युनिटीज टू मेक देम अंडरस्टैंड द कंसर्न्स अबाउट सिक्योरिटी, the challenges in Web3, and how we at Securedapp can help. B, C, we are also partnering with chains, यस, जहाँ पे we are becoming a dedicated security partner for the chains for any project coming on their chain to be audited by us. So एक वो भी हमारा growth का plan है. But the major growth that we see is, of course, we would need some more fund. We have a global expansion plan. We see this going global in few years time from now. हमारा AI based model जो है ना, which detects the problem on its own, and if it cannot detect a new problem, it will red flag it to us internally saying that I've not been able to detect this problem, but there is some suspicious activity, and then on the back end we train this for the new problem. सो हम उसका ट्रेनिंग करते हैं. तो ये जो प्रोडक्ट है ना, बहुत रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट है. वी सी दैट दिस इज गोइंग टू बी अ ब्लॉकचेन सिक्योरिटी प्रोडक्ट coming from India for the world. yes, definitely I can see because it is a really revolutionary product and काफ़ी सारे बिकॉज वेब थ्री के डोमेन में ये मुझे लगता है इंडिया में बहुत ही यूनिक होने जा रहा है एंड आपकी विजनरी टीम भी डेफिनेटली काफ़ी यूनिक आपकी R&D टीम होगी जो कि जिसके साथ आप मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है. सो ओके, सो अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है लाइक स्टूडेंट्स के लिए. आई एम स्टूडेंट ऑफ थर्ड ईयर एंड मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ जहाँ पे मैं कई सारी टेक्नोलॉजीज़ को देख रहा हूँ, AI को देख रहा हूँ, मैं मशीन लर्निंग डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर्स से कनेक्ट हूँ एंड मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने चल रही हैं. सो ऐसे में जहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे वेब डेवलपमेंट की जॉब है, ऐप डेवलपमेंट की जॉब है, ठीक है. मैं फिर से अपने स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है. सो यहाँ पे ऐसी कुछ जॉब हैं और ये जॉब्स इजीली मिल जाती हैं लाइक आपको कुछ सर्टेन डीएसए प्रॉब्लम्स एंड बैक एंड फ्रंट एंड मतलब एक स्किल इंप्रूव करने के बाद कुछ टर्म्स को क्लियर करने के बाद ये चीज़ें फिगर आउट हो जाती हैं. इस टाइप की जॉब है. बट वेब थ्री में मैंने जहाँ तक देखा है ज़्यादातर रिमोट जॉब्स हैं और वो भी फॉरेन की जॉब्स हैं. या सो द थिंक इज अगर कोई न्यू बाई है और वो जाना चाहता है वेब थ्री में, वेब थ्री डेवलपर बनना चाहता है, सो और उसे एक सिक्योरिटी भी चाहिए लाइक कि मुझे जॉब भी इजीली मिल जाए एंड ऑफ काइंड ऑफ थिंग्स, तो वो उसके लिए क्या रोड मैप रहेगा लाइक ऐप डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट या डेवलपमेंट एरिया में डेवलपमेंट सेगमेंट में एक बहुत कॉमन टर्म होती है अगर आपको रिमोट जॉब या फॉरेन की जॉब चाहिए तो दैट इज ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन. या या आप Correct. ओपन सोर्स पे आप एक्टिव रहो, ओपन सोर्स करते रहो, देन we, डेफिनेटली आप. we have built our product on open source. ओह ग्रेट, हम ग्रेट. आप जाके अभी हमारे बारे में सब कर सकते हो गिटहब पे. यस, यस. हम्म. सो द थिंक इज अगर एक न्यू मतलब एक बिगिनर है तो वो किस तरीके से वेब थ्री में एक्सप्लोर करे कि जिससे कि वो एक जॉब भी सिक्योर कर ले एंड एक अच्छा वेब थ्री डेवलपर भी बन जाए. That's a very good question. My first suggestion would be उनको अपने कोडिंग स्किल्स को शार्पन करना है. ए बी यहाँ द डिमांड फॉर वेब थ्री डेवलपर्स आर मोस्टली इनटू सॉलिडिटी. ठीक है, अगर वो सॉलिडिटी एज अ लैंग्वेज पे काम करते हैं फॉलोड बाय रस्ट एंड ऑल, दे विल डेफिनेटली be able to get a job because 90% of the projects are on solidity. यस, यस. वो है. Now this was in terms of language. Now let's come to what exactly role. If they are a smart contract developer, highly skilled and high in demand, तो उनका तो डिमांड बहुत है because smart contract developers are in demand, and every project I said the back end, what the contract which is working is a smart contract. A. Now B, अगेन इफ यू आर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर, आपका एक और लाइन खुल जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर. विद सीनियरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग आपको पता चल जाता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है विच शुड बी फिक्स्ड. तो आप धीरे धीरे सिक्योरिटी एनालिस्ट भी बन जाते हैं एंड यू ऑल्सो कम बिकम अ सिक्योरिटी ऑडिटर. सो आप देखोगे कि इट्स अ प्लिथोरा ऑफ लाइन दैट ओपन्स अप फॉर एनीबडी हु इज विलिंग टू गेट इनटू दिस. Along with that, Web3 may is not as user friendly as web 2 when it comes to um, user adoption. अभी तक तो नहीं है, बट इन फ्यूचर आई सी इट मीन्स कि फ्रंट एंड पे बहुत सारा काम बाकी है.
Yeah. जो यूजर इंटरफेस और यूजर इंटरफेस, तो वहां पे भी बहुत सारे रोल है. मतलब कैन दिस बी एज सीमलेस एज वेब टू में आप किसी भी ऐप पे जाते हो, डायरेक्टली मेल से लॉग इन करते हो एंड यू स्टार्ट यूजिंग इट, करेक्ट? वो चीज को हमें वेब थ्री पे भी लाना है. इट मीन्स हु विल ब्रिंग दैट, हु विल बिल्ड दिस प्रोडक्ट, ऑल द डेवलपर्स, करेक्ट? तो फ्रंट एंड में भी उतना ही काम है. So there is no dearth of job opportunity, uh, provided one is serious about building career in what they are doing. There are very high paid jobs, so वो भी problem नहीं है. The problem that you brought in picture is a security. तो अभी का क्या है ना, जॉब सिक्योरिटी तो मतलब यार स्टार्टअप्स के दुनिया में ना जॉब सिक्योरिटी तो कहीं नहीं है. आई कैन नॉट गिव अ फॉल्स प्रॉमिस टू योर लिसनर्स और कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, जो है ही नहीं ना. आप जा रहे हो मार्केट में, यू वर्क फॉर 2 years एंड देन यू गेट लेड ऑफ और यू हैव बीन आस्क्ड टू लीव, करेक्ट? अगेन यू wait for 6 months and get into a job. But this is the part of a new uh, uh, economy. This is how it is. We have to accept it. A, we have to accept it. B, we have to adopt. वैसा अपने आप को भी बनाना है कि चलता है यार, ये नहीं तो कोई और. बी एंड सी, हमारा साइड में गिग प्रोजेक्ट्स भी चलते रहना चाहिए. अगर Yes, yes. बिलीव कि मैं भी कुछ बना सकता हूँ, बनाओ दोस्तों के साथ मिलके. यू नेवर नो व्हाट टेक्स ऑफ, करेक्ट? Huh? So security, I don't think I should be able to give you any wrong promise. थोड़ा तो हर, but it's not in Web3, it is everywhere. Yes, yes. Web3 में कहाँ, Web3 तो इंडस्ट्री भी इवॉल्व भी नहीं हुई है. अब Web2 में तो जितनी भी कंपनियां जो ले ऑफ कर रही है, वो एक भी Web3 की कंपनी नहीं है, सारे Web2 की कंपनी है, करेक्ट? Mm-hmm. Yes. I don't want to name them, but you know all big unicorns, correct? So तो यानी Web2 में भी सिक्योरिटी नहीं है. सिक्योरिटी इज समथिंग दैट वी शुड नॉट बॉदर मच, क्योंकि उसको हम कुछ कर नहीं सकते. Yes, yes. ओके, मीन एक सर्टेन लाइक एक हमें जावास्क्रिप्ट एंड सॉलिडरी जैसी मतलब अपनी स्किल्स पे को इम्प्रूव करने के बाद डेफिनेटली हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. ठीक है. हमें हमें बहुत सारा इंटर्नशिप करना चाहिए ड्यूरिंग आवर कॉलेज टाइम. या. एंड उस इंटर्नशिप में ना हमारा ओनली वन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लर्निंग, लर्निंग एंड कंट्रीब्यूशन. बाय द टाइम वी आर आउट ऑफ कॉलेज ना, हम कुछ नहीं तो इतना तो जान गए कि दूसरे का बनाए तो बनाए, नहीं तो अपना भी बना सकते हैं. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर. या. आपको वो कैसे आएगा? सर ओनली वन ऑब्जेक्टिव, बिकॉज एनीवेज यू आर अ स्टूडेंट, द फैमिली, यू आर नॉट डिपेंडेंट, योर फैमिली इज नॉट डिपेंडेंट ऑन यू. आपको वहां पे मोस्टली डू अ मल्टीपल इंटर्नशिप एंड लर्न थिंग्स. 3 months 6 months का इंटर्नशिप करके, दैट इज गोइंग टू हेल्प. ओके. या, ग्रेट. ओके, सो आपने एक टर्म बोली लाइक एंटरप्रेन्योर्स कि आप अपना भी कुछ बनाओ साइड में. लाइक हो सकता है आपका ही क्लिक हो जाए, आपकी जॉब से बेटर क्लिक हो जाए. ठीक है. सो ऐसे सेगमेंट के लिए लाइक कोई है कुछ बिल्ड कर रहे हैं, बट वहाँ पे क्या होता है ना, लाइक काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आती है एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में. लाइक फर्स्ट वन इज अ टीम बिल्डिंग. अब ये इट इज़ अ मुझे मतलब आई होप आप भी ये ऐसी चीज़ें फेस कर रहे होंगे. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज अ वेल्थ फंडिंग. एंड और उसके बाद जो होती है रिसोर्सेज एंड कनेक्शंस एंड ऑल थिंग्स. ओके. सो इस पॉइंट पे लाइक यू 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 हैव आल्सो गुड एक्सपीरियंस इन एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन, बिकॉज आप स्टार्टिंग से ही स्टार्टअप में ही काम किए हो, मैंने देखा जहाँ तक मोस्टली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. करेक्ट. सो मतलब एज ए बिगिनर अगर कोई है, लाइक आई एम ए बिगिनर एंड आई वांट टू बिल्ड अ प्लेटफॉर्म एंड इट इज़ अ लाइक अ टेक डोमेन. मैं कुछ टेक डोमेन में कुछ बिल्ड करना चाहता हूँ, कुछ नया एंटर करना चाहता हूँ, इनोवेट करना चाहता हूँ. सो मेरे लिए क्या एडवाइस होगी आपकी? बहुत लाइक. बढ़िया क्वेश्चन पूछा है जो आपने पूछा ना कि अगर कोई व्हाट आर द चैलेंजेस एंड हाउ टू मिटिगेट इट व्हेन इट अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप. We need to understand that entrepreneurship is very enterprising in nature. Enterprising itself means you are putting a multiple hats on your this. आप यस. बहुत तरह का काम करते हो, and that is where it challenges you. आपको entrepreneurship का एक बहुत बड़ा thrive है कि it challenges you every day to do something special, something different, and run on it. Entrepreneurship is the only place where you do not know what problem is going to come tomorrow. आपको हर रोल में ना ये प्रॉब्लम पता होता है कि कल मुझे ये बॉस को बताना है, ये वाला प्रोजेक्ट बनाना है, ये
बट एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ पता नहीं होता कि कल कौन सा प्रॉब्लम आएगा। टीम पेपर डाल देगी, प्रोजेक्ट मेरा वर्क नहीं करेगा, जो प्रोजेक्ट डिप्लॉयड है वो सर्वर नहीं काम करेगा, या फिर एचआर बोलेगा कि लोग ज़्यादा कुछ डिमांड कर रहे हैं। मतलब यू नेवर नो, देयर आर मल्टीपल सेट्स ऑफ प्रॉब्लम, और ब्यूटी ऑफ दैट इज यू विल बी हैंडलिंग, तो उसका फन बहुत मजा है। मतलब एक बार वो आपको, यू विल स्टार्ट टेकिंग द टेस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इट इज वेरी एंटरप्राइजिंग। एंड एनीबडी हु इज वेरी रिलेंटलेस कि मुझे करना तो है, दे थ्राइव इन एंटरप्रेन्योरशिप। ए, नाउ हाउ डू वी मिटिगेट द प्रॉब्लम्स? देखो फाउंडिंग टीम का जो प्रॉब्लम है ना, जो इफ यू हैव अ टॉप डाउन अप्रोच, अगर आप ऊपर से चीजों को देखते हो तो आप, आई थिंक यू विल हैव अ बेटर पोजीशन टू fix these issues. Founding team has to be very good. It would be even better if you have a founders from your community and your course or your class. आपके फ्रेंड्स अगर हैं साथ में तो अगर करोगे तो वो और भी अच्छा है। If not, work for few years. You do not have to start directly. Work for 5 years, 6 years. And वहाँ पे क्या होगा, अगर कॉलेज वाले जो फ्रेंड्स हैं, if they have also worked and learned, आपको other domain of business you will learn. You will say how the HR function is working, how is finance, how are legal and compliance working, how we can develop the sales. It is not only about developing a product, it is about developing a product and selling it successfully and regularly. Correct? एक दिन भी बेचोगे तो नहीं चलेगा। तो एक प्रोडक्ट को बनाओ, सक्सेसफुली सेल करो और हमेशा सेल करो। दिस इज वेयर द पिक्चर कम्स इन। सो आप देख रहे हो, सेल करना, सक्सेसफुल करना। अब यहाँ पे आपको, यू विल नीड somebody फॉर अ गुड सेल्स स्किल्स, यू विल नीड somebody फॉर अ गुड मार्केटिंग स्किल्स, बिकॉज द ब्रांड, आपने बोला सिक्योर्ड अप, आई सी हियर एंड देयर, सो ब्रांड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पीपल हैव टू नोटिस यू, करेक्ट? यस यस। तो मार्केटिंग स्किल चाहिए, सेल्स स्किल चाहिए, एंड प्रोडक्ट स्किल इज समथिंग दैट यू ब्रिंग। टेक स्किल्स आप लोग भी ला रहे हो, करेक्ट? तो आप लुक आउट फॉर दोज पीपल, एंड जो जो जोड़ा थ्राइविंग करे, तो आपका वो फाउंडिंग टीम हो जाएगा। अब नाउ कम्स टू इन्वेस्टमेंट। आई डोंट नो हाउ कैन आई आंसर, बट अगर आपने पहले कुछ साल काम किया है तो दिस विल हेल्प यू। ए, कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज माइट हेल्प यू। आप, you will be a part of hackathon and all. I think that is where all the hackathons that you attend with your team, the winning prize should be used to build your own company, not to have party. This is my understanding. Because if not that money, from where will you bring money to run the company until you have raised? करेक्ट? तो वो आपका कैपिटल का कुछ सॉर्ट करेगा, एंड इफ योर प्रोडक्ट इज गुड, देर आर मल्टीपल एंजल्स एंड VCs who invest into early stage startup. You can go ahead, but it's not that easy. It looks easy, but इतना होता नहीं है। मतलब there are hardly 5% of the projects which get funded every year. 95% are not get funded at all. आप समझ रहे हो? डेफिनेटली। तो ये हम इशू है। and now you have to see कि how do I come into 5 projects. So it's not a, it should not, the funding should not be the end objective. If you can run your company or a product on a customer capital, there is nothing like that. We have been doing it via customer capital so far. वाओ ग्रेट। एंड या बूटस्ट्रैप अगर कोई चीज़ें चल रही हैं सो वो भी एक बेटर ऑप्शन है। बूटस्ट्रैप तो है जो, जहाँ पे आप पैसे डाल रहे हो, बट कस्टमर कैपिटल जब आ गई, जहाँ पे आप जो कुछ कर रहे हो उसको बेच रहे हो और उसी से पैसे आ रहे हो और उसी को उसी में लगा दे रहे हो, so up you understand the circle is much better. या डेफिनेटली ये प्रॉफिटेबल होगा। ओके सो ठीक है, ये एक सर्टेन एडवाइस हो गई। एंड वन मोर थिंग लाइक, अभी आपने रिसेंटली बोला कि यार अगर हमारे पास कई सारे सेगमेंट हैं लाइक, आप एक हम एक फाउंडिंग टीम बना लेते हैं, ठीक है, और हैकेथन्स, मतलब मुझे जो पर्सनली जो लगा कि ये इट इज़ अ बेटर बेटर एडवाइस फॉर टुडे सेशन, कि आप अगर कहीं से भी आपके पास फंड आते हैं लाइक हैकेथन से, प्राइजेस से, सो उसे पार्टी के बजाय आप यहाँ इन्वेस्ट करो, बिकॉज कॉलेज में ये चीज़ें बहुत कॉमन है। अगर कॉलेज स्टूडेंट है तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, और नहीं, लाइक 10%, 10-20% पार्टी में लगा दो। लेकिन व्हाट आई मीन टू से, हाउ विल यू गेट कैपिटल? जैसे आपको ड्रीम है ना, कुछ कंपनी बनाना है, कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए कैपिटल कहाँ से आएगा? पेपर्स कहाँ से बनाओगे? कोई मार्केटिंग का कुछ, तुम्हें 2-4 जूनियर बंदे चाहिए, प्रोजेक्ट तुम बना रहे हो, उनको कहाँ से पे करोगे? तो 10 हैकेथन में जाओ, 3-4 जीतो, उसके पैसे को डालो और बस उसी से स्टार्ट कर दो। या डेफिनेटली डेफिनेटली सर।
सो मुझे लगता है बस और कोई अगर आपके पास कुछ क्वेरी हो या कोई सजेशन हो, एडवाइस हो, आप डेफिनेटली शेयर करें। No, I don't think I have any advice. You guys are very smart, and I respect the new generation. And I respect the new generation and the new developers more because I believe they take all informed decision. उनको इतना समझाना कुछ भी समझाना बहुत मुश्किल है. They understand what. The only good thing दैट आई एक्सपेक्ट कि वो जो काम करे उस पर थोड़ा जेन्युइनली करे फॉर फर्स्ट फ्यू ईयर्स. क्या होता है कि फर्स्ट फ्यू ईयर्स में उनका दिमाग ना यहाँ से वो जंप करने लगता है, इस कंपनी से वो कंपनी, एंड दैट्स वेयर आई फील कि अल्टीमेटली दे डू नॉट मेक अ वेरी गुड करियर. So far I have seen many people doing that. Not very good learning is what I believe. So there is no other advice. Do that. And I would want your community to have a look of solidity shield. अगर उनका कोई project है free of cost, they can come and scan their project. We are not charging anything from students for now. Future का तो कोई nobody can say, but future में भी we ensure that हम उनको at least 1 or 2 scan तो free देंगे ही. डेफिनेटली डेफिनेटली, थैंक यू सर, ये काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा आपका। एंड वी आल्सो ट्राई टू प्रमोट एंड ट्राई टू present in our team, in our community, your security platform, and definitely इस पॉडकास्ट के बाद काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे अवेयरनेस आएंगे वेब 3 के बारे में। एंड वन मोर क्वेश्चंस मैं मिस कर गया था। मैंने जब अपनी कम्युनिटी में टीम से पूछा कि यार मैं जो है ऐसे से एक सर्टेन पर्सनालिटी से मिलने जा रहा हूँ, मतलब उनसे कनेक्ट होने जा रहा हूँ, तो उन्होंने बोला, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे मेरे पास। एक कॉमन क्वेश्चन था कि लाइक मेंटल हेल्थ, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे भी बंदे हैं, ऐसे भी पर्सन हैं जो कि ऑलरेडी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं एक साथ। तो दो टाइप की प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, लाइक वन इज अ टाइम मैनेजमेंट एंड नेक्स्ट वन इज अ मेंटल मेंटल हेल्थ। सो इस सेगमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है. अच्छा एक बात बताओ. I'll tell you, mental health is a part of our health. Why do we have to create so much thing on our head that we find that we are finding it difficult to mitigate or navigate with the problems that we have? हम अपने सर में इतना सारा चीज बना लेते हैं, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो करना है. अब 2 चीज करो, 3 चीज करो और अच्छा करो. Do not do. Always remember, there is how to mitigate a mental health. There is nothing to be fixed, no feat to be achieved. कुछ भी ठीक नहीं करना है, दुनिया खुद चल रही है और चलते रहेगी. We are not the one who has to fix it. If we can fix ourselves, that's more than enough. Correct? So there is nothing to be fixed and no fit to be achieved. आप हमें कोई हम we are not working to achieve any certain fit कि मुझे ये achieve करना है. The journey itself is our success. जो हम जर्नी पे है ना वो हमारा सक्सेस है. एंड द मोमेंट वी स्टार्ट टेकिंग दीज वर्ड्स कि मुझे कुछ अचीव नहीं करना है, मेरा जर्नी ही सक्सेस है. अरे अचीव कर लोगे उस दिन क्या करोगे? सपोज यू हैव मेड कि आई विल बिल्ड अ कंपनी एंड मेक इट अ यूनिकॉर्न. सपोज इट हैपेंड, व्हाट विल यू डू दैट डे? अगेन यू विल पुट सम अदर गोल्स. करेक्ट? डेफिनेटली। मजा नहीं आया आपको. रादर कि I'll be a part of a my company would be my journey would be a part of my company, wherein the unicorn would be one feet, other feet would be another unicorn or third unicorn or whatever you call it. But for me the success would be my journey. How good, how much values I carry, how much value I'm able to give back to society. Am I the person who follows all the ethics in business? अब देखो कितना मजा आ रहा है. मतलब तुम्हें लोड नहीं हो रहा है ना तुम्हारे पे. तुमने क्या किया, मल्टीपल हैट्स पहनने के कारण मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को हाँ बोल दिया, किसी को कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, किसी से कुछ पैसे उठा लिए हो. डोंट डू दैट. Don't do that. Do 2 3 things which you are very much interested. So, learn how to say no. Mental health is as good as this. The moment से कि मैं ये नहीं करूंगा, मेरे से ये नहीं होगा, अब देखो कितना आराम से लाइफ चलेगा ना. हर चीज को डेफिनेटली। में नहीं कूदना है, हर चीज को नहीं करना है. ओके। एंड मेरा एक और क्वेश्चन था टाइम मैनेजमेंट के बारे में, शायद हम्म. हाउ टू मैनेज आवर टाइम, बिकॉज ये भी एक टफ टास्क है। अच्छा. Tell me who is managing time better than you? मी। Nobody is managing better time. Everyone has the same amount of time. It's just that
and everybody is sleeping on almost the similar level, 8 to 10 hours almost. या एक्सेप्शनल को हटा दो, जो 12 घंटे सोते होंगे और जो 4 घंटे सोते होंगे. 90% of जनता would be sleeping from 7 to 10 hours. Hmm? So, so what is there in the hand after that? 14 to 15 hours. करेक्ट. डेफिनेटली सो उसी 14-15 आवर्स में सबको सब कुछ करना है. करेक्ट. हाँ. अभी मैंने बहुत जल्दी, जस्ट नाउ बिफोर दैट आई सेड कि टेक प्रोजेक्ट विच यू कैन डिलीवर, टेक असाइनमेंट विच यू कैन वर्क ऑन, डू नॉट से यस टू एवरीथिंग. तो टाइम मैनेजमेंट तो ऐसे ही हो गया ना. आप इफ यू से कि मैं मूवी भी जाऊंगा, आज मैं क्रिकेट भी खेल लूंगा, शाम में मैं कोडिंग भी कर लूंगा, और वो आई हैव अ डेट विथ माय गर्लफ्रेंड वो भी कर लूंगा. आप देख लो कितने चीजों को आपने यस बोल रखा है. आप बोलो कि जैसा है, इस वीक में तो मैं सिर्फ मूवी जाऊंगा, नेक्स्ट वीक में मैं सिर्फ ये करूंगा. अब देखो आराम से आपका टाइम मैनेज हो रहा है. डू नॉट कमिट योरसेल्फ इनटू सो मेनी थिंग्स दैट यू कांट मीट. अब देखिए हाउ हाउ नाइसली हैव बीन. सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम वी आर सेइंग यस टू एवरीथिंग. अब देखो ना, मैंने बोला, और उसके बाद शाम में फ्रेंड्स के साथ क्लब भी जाना है. वी हैव नाउ सी, इफ यू हैव 200 थिंग्स इन अ डे एक्सेप्ट द टाइम फॉर द स्टडीज, वो भी एक टाइम लेगा. तो आप कर क्या पाओगे? सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी सिंपल. एवरीवन हैज गॉट अ सेम अमाउंट ऑफ टाइम. People, 90% of the world sleeps around same time. One thing that I can say, if you really want to do, if you are getting up early, this gives you more productive time in hand. आप देखो, 4 बजे से सो के 10 बजे उठो, 6 घंटा दोनों में आप सो रहे हो. करेक्ट. और रात को 10 बजे से सो के 4 बजे उठो, दोनों में आप 6 घंटा सो रहे हो. बट आप सुबह में जब 4 बजे उठते हो, यू हैव नो बडी टू टेक आउट योर टाइम. या 5 बजे आपके पास वो प्रोडक्टिव टाइम होता है. बट जब आप 10 बजे उठते हो, द वर्ल्ड इज देयर टू टेक योर शेयर ऑफ टाइम. ये कर दो, वहां चलना है. करेक्ट. बिकॉज दे हैव ऑल्सो गॉट अप. डेफिनेटली So, but in both cases, you slept 6 hours. So, if we put a habit of getting up early, we will have more productive time in hand. Time is not going to increase, but productive time will definitely increase. वाह वाह नाइस एडवाइस एंड डेफिनेटली ये काफ़ी काफ़ी अच्छी एडवाइस रही लाइक सुबह उठना एंड अर्ली मॉर्निंग रियली नहीं, मतलब मैं फोर्स नहीं करूंगा, बट दोनों केस में तुम 6 घंटे सोते हो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ. 10 से 4 सो या 4 से 10 सो, तो 6 घंटे तो तुम्हारे सोने में जा ही रहे ना. या ओके सो या मुझे लगता है हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं. Absolutely. I think we had a very long, elaborated या call. ओके सो वाइंड अप करते हैं सर. Let's do. It was nice talking to you, Kumbhaj, and you had an amazing question, and you have been a very kind host. You didn't put me in trouble. Thank you for having me on your podcast today. ओके सर थैंक यू सो मच एंड मैं अपने ऑडियंस को बता दूं यार, जो भी हम सिक्योरिटी ऐप प्लेटफॉर्म है इसके बारे में, और जो भी सर की लिंक्डइन प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शंस में और जहाँ भी ये आप वीडियो देखोगे वहाँ सर्टेन उनके इनसाइड बॉक्स में, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी. ठीक है, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो. और सर ने ऑलरेडी प्रॉमिस कर रखा है कि हमें काफ़ी सारे टोकन्स हमें हमारी कम्युनिटी को प्रोवाइड होते रहेंगे. सो एक्सप्लोर करते रहें वेब 3, बिकॉज वेब 3 डेफिनेटली, आई एम अ वेब 2 डेवलपर. ओके, आई एम अ नोड.js डेवलपर, बट मेरा मानना है कभी कभी लाइक बिकॉज जावास्क्रिप्ट वेब 3 के लिए सबसे बेसिक सेगमेंट है कि आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए. ठीक है, जावास्क्रिप्ट के बाद सॉलिडिटी आनी चाहिए. सो आई ट्राई टू मैनी टाइम्स टू लर्न अबाउट सॉलिडिटी, बट ड्यू टू सम इशूज लाइक टाइम्स शॉर्टेज, तो मैंने एक्सप्लोर किया नहीं. बट डेफिनेटली मेरा भी यही मानना है कि वेब 3 डेफिनेटली एक फ्यूचर होने वाला है, एक ऐसा सेगमेंट होने वाला है जहाँ पे बहुत ही क्रेजी होने वाला है. बस बाकी कुछ नहीं. बाकी सर जो होता है देखते हैं. एंड ऑल द बेस्ट. मेरी साइड से भी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपकी टीम को. आप लोग काफ़ी क्रेजी कर रहे हो, बिकॉज मैं भी सर्टेन देखता रहता हूँ काफ़ी चीज़ें लाइक बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर हैं जो कि बताते रहते हैं कि यार सिक्योरिटी ऐप काफ़ी अच्छा कर रहा है, आप वहाँ से करो, ये यहाँ से ये कर लो, ये रेफ़र कर दो, वो कर दो. सो मैंने कहा ठीक है. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर गोल्डन टाइम. आपने यहाँ पे अपना. Thank you, Kumbhaj, and all the best to you. ओके ओके सर, थैंक यू सो मच. Thanks a lot.